Hello everyone, welcome to new video. In this module, we are going to discuss about power plant based on nuclear energy. In the power plant based on nuclear energy is also steam turbine. If we see the follow chart on the screen, so the follow chart do that nuclear reactor for the nuclear fission, steam for the steam generation from the water. Next, it will be collected to the steam turbine throughout it generator, and the generator generates the electricity. Steam turbine again convert steam into the back into the water, which is again used for the steam system for the steam generation from the water. As you can see, the energy released by the fission of a nuclei of atom like uranium and plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. The energy in the steam rotates the turbine, which in the turn device the generator producing electricity. In the follow chart you can see, just note down this follow chart in your diary. Thus here nuclear energy is converted into a thermal energy. As you see, the step by step transformation of energy is nuclear energy to thermal energy to kinetic energy of a steam, and the kinetic energy of a steam is again converted into kinetic energy in the turbine, and from the kinetic energy of the turbine it converted into electrical energy. As you can see, nuclear energy, which is getting from uranium and plutonium, converted into thermal energy, high temperature pressure heat. It is again converted into kinetic energy in the steam, which flows from the one to another, which rotate the shaft as well. Again it converted kinetic energy in the turbine, which is generator, which start rotating due to the kinetic energy in the steam, and next it is converted mechanical energy into electrical energy. This is the transformation in the nuclear power plant. In the nuclear power plant, as we have seen, conversion is take place step by steps. When the neutron is bombarded on the atom of uranium, the number is 235. It absorbs the neutron and converts into its isotope uranium 236 to uranium 236. Being extremely unstable, converts into atom of barium and krypton through a process of fission, releasing their neutron and 200 megawatt energy. The 3 neutrons generated in this process causes fission. Their other uranium 235 atom is released more energy. As you can see over here, the steam generation nuclear fission occurs and chain of the nuclear fission, which creates the 200 megawatt electrical energy. The neutron release in this reaction or reactor nucleus more energy through the fission of more uranium nuclei. This process of fission of uranium 235 atom continuous and is called the chain reaction. The nuclear power plant, a controlled chain reaction, result in the release of thermal energy, which is used for generation of electrical energy. Here nuclear energy is getting from the uranium and plutonium. As you can see students, when these uranium bombard on the nucleus of 235 to 236, so they create energy which is approximately equals to 200 megawatt. This energy can be converted again into electrical energy, which will be transmitted from one place to another. As you can see student, here we use a plant. The schematic plant we are going to discuss, or we are going to see on the screen further, but before that we have one nuclear fission which is take place between uranium, and the second product is taken as uranium 236 to uranium 235. This is the generation of energy from the nuclei of the highly unstable particle. You know student, uranium, thorium, palladium, gallium, germanium, arsenic, silicon, boron, krypton, xenon, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, palladium. These all are
means not that much unstable, but they are also unstable, in which uranium, thorium, and the last group which we have taken from the periodic table, that the F block elements, were considered to be as a high reactive element because they are unstable at their stage. Because of because of process of fission. Fission means what? Bombardment of two atoms on a nuclei which convert the neutron absorption. When neutron absorption takes place and nuclear fission occurs, these nuclear fission creates energy which is approximately equals to 200 megawatt. MeV. Capital M, E small, V again capital. As per that we can write it down. Okay students, so this is the nuclear power plant does not use fossil fuels like coal, therefore problems like air pollution do not arise. Also it is sufficient nuclear fuel is available. This can be good source of electrical energy. However, there are few problems associated with this nuclear power plant as well. As you can see students, we know we don't need over here the electrical energy, means any kind of a fuel over here. Now on the screen you are able to see the schematic diagram of nuclear power plant, in which student you are clearly see one nuclear reactor is there, another control points, one boiler, one turbine which rotate the generator shaft which is connected to the generator. Next is generator, next warm water and cooling water. The cooling water again goes to condenser. Condenser transmit with the help of pump through the boiler. Boiler start creating the heat in the chamber, and this heat transmitted to the turbine. From there again it will be get collected and warm water rise up goes into the cooling tower. देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, जो थर्मली बेस्ड होते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है, दो पंप, कंट्रोल पॉइंट्स, बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर, शाफ्ट, कूलिंग टावर, वार्म वाटर कंडेंसर, कोल्ड वाटर कंडेंसर, ये ऑल टाइप के सेवरल टाइप के जो कंडेंसर हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, सो दे स्टार्ट रोटेटिंग व्हेनेवर. देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर पे फिशन होना स्टार्ट हो जाता है यूरेनियम का, वैसे ही वहाँ पे फिशन की वजह से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर के फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज करता है. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यही एनर्जी को रिएक्ट करने के लिए, टर्बाइन को रिएक्टर में स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इसी न्यूक्लियर रिएक्टर को पंप से कनेक्ट किया जाता है, जो कि कंट्रोल पॉइंट्स को कंट्रोल या फिर एक्टिवेट करने का काम करता है. यहाँ पे एक टावर होता है कूलिंग टावर, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट वाटर ओवर हियर. अगर हम लोग कंटिन्यूस वाटर को यूज़ करते जाएंगे तो वहाँ पे वेपर क्रिएट होगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वाटर जो है यूटिलाइज हो जाएगा. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे खारा पानी नहीं ले सकते क्या, या फिर समंदर का पानी नहीं ले सकते, बिकॉज अर्थ इज 75% कंटेनिंग वाटर. नहीं बेटा, समंदर का पानी लेंगे तो क्या होगा, जैसे वो इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे नमक जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से जो पाइपलाइंस है उसमें सूलन पड़ेगी, सड़न पड़ेगी, जिस वजह से वो अगेन ख़राब होने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे वाटर को वेस्ट भी नहीं करना है, यूटिलाइज भी करना है. सो दैट्स द रीज़न हम लोग कूलिंग टावर यूज़ करते हैं, जो पाइप के थ्रू वाटर को सप्लाई करता है और पाइप के थ्रू ही वाटर को कूल करने का काम करता है. व्हेनेवर इट स्टार्ट बॉयल द वाटर, एट दैट टाइम steam generated. This steam again get dense in the condenser and again form into a water droplet, which are converted this steam into the water, as you can see over here. Students, जैसे कि हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग फॉसल फ्यूल्स यूज़ नहीं करते. फॉसल फ्यूल्स माने कौन से फ्यूल्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऐसे टाइप के जो फ्यूल्स होते हैं वो हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं. तो एक हिसाब से एयर पोल्यूशन तो हम लोग सफिशिएंटली रोकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास या फिर न्यूक्लियर फ्यूल भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पावर प्लांट में कुछ एक ड्रॉबैक्स है. अब ये ड्रॉबैक्स क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं. स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप जानते हो प्रत्येक
एस्पेक्ट में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे पिछले वीडियो मॉड्यूल में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होता था, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, वी हैव अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ फॉसल फ्यूल्स. So because of that, if whole fuels get used, at that time what happen, we don't have a source to generate the electricity or to rotate the turbine. If we don't have any source, so how will we run the generator? So that's the reason we need a source. Here sources are of two types, good sources and bad sources. Here if we see that in the nuclear fission में fossil fuels तो we don't need it, we don't need fossil fuels in the nuclear fission, but we need one type of energy, and that energy is nothing but the nuclear energy, which is available in the format. If you see students, so here on the screen you have to see the natural drawback on a screen. What are the problems of fossil fuels using nuclear power plant? The first problem is the product after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiation. The product are called as nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientist. See students, रेडियोएक्टिव एलिमेंट को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो रेडिएशन तो इमिट करने ही वाला है. वो रेडिएशन जो है, मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट को जैसे हम लोग फिशन करते हैं, न्यूक्लियर पे जैसे बम्बार्ड करते हैं, तो न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट होते हैं. ये वेस्ट सेफली कैसे हम लोग डिग्रेडाइज करें, या फिर सेफली कैसे हम लोग इसका मैनेजमेंट करें, सेफली इसको डिस्पोज कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था साइंटिस्ट का. सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट an accident in the nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in the release of very harmful radiation. अगर आपको मालूम होगा तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़ एन बेस्ट एग्जाम्पल. उसमें भी ऐसे ही मतलब रेडियो एक्टिव इमिशन हुआ था, वहाँ पे तो गैस यूज़ हुआ था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो यूज़ किए ही नहीं थे. देयर बाय ओनली गैस पार्टिकल वी हैव यूजिंग. बिकॉज ऑफ दैट ओनली whole the area of Bhopal city get infected. So these are the harmful effect of using thermal or nuclear power plant. Okay students, so I hope you understand this phenomenon. If you like this phenomenon, so don't forget to like, share, subscribe and comment. If you have any doubt, so comment in the given comment box which is given below. Thanks for the watching. Thank you.